Chalo, I think like we are good. So we'll start with the first question. And the first question is, पहले सवाल, what do you understand by user experience? So बच्चे वाला सवाल है, but हाँ, let's see what people perceive, what they understand by user experience. So now I mean like it's on you. Like you should now uh, unmute yourself and talk about it. आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूएक्स और दैट्स द यूजर एक्सपीरियंस। आपके हिसाब से क्या है ये? सी आई स्टार्ट वेरी बेसिक से। हाँ, कोई बोलना चाहेगा, कोई समझाना चाहेगा कि लाइक व्हाट इज यूजर एक्सपीरियंस? एनीबॉडी? Hi, Manpreet. हाय विनोद, सुनील, राइट? हु विनोद? User experience, all about how user experience using my product. It can be a physical product, it can be digital product. Perfect. So anybody else? Thank you so much, Vinod. Pradnya here. Thank you. Yeah, Pradnya. Yeah. Actually, user experience is the experience which what user wants to see on the screen. Okay. So basically, you said, let me put notes here. So first, Vinod said what? I mean, the experience that the user gets when using a product, correct? So this is what Vinod said. This is too big. This is fine. Now, you said what user gets when using What- screens, right? Yeah, exactly. Okay. Anybody else? Anything? Whatever you think. I mean, Yes. yeah, Sunil. When a user interact with any product, maybe it's a physical or virtual or it's a software, and how its experience with that product is called user experience. Okay. Experience that user gets when using product offline or online, both, right? I think Vinod also said the same thing. Wonderful. Cool. What else? So when we are talking about user experience, what is the center point or basically the pivot point here? Who's the main character here? User. Okay. And who? The user Product. with respect to the Perfect. Product. and whatever it is they are feeling from the starting to the end of the product, like everything. So you're talking about That's journey, right? the whole journey, yeah. Okay. What else? So whatever they are feeling, they are Okay. So yeah. feeling. Perfect. And Journey. so these are the keywords. Okay. These are the keywords that will help you understand design better. Like user, who's the user? कौन है user? Product, कौन सा क्या product है? Digital product है, physical product है. Digital में भी वो किस type का product है? Is it a mobile app or is it a, like an app on a kiosk or TV में TV का app है, right? So those things. Similarly, journey is very important. Why? Because it will help you or it helps the designers understand the complete journey कि कहाँ क्या starting point था, क्या मार्केट में क्या गैप था या क्या नीड थी यूजर की, एंड देन उसको हाउ कैन वी एज डिजाइनर्स फुलफिल or fill that gap. Feeling is also important because at the end what we do is we create products for the people, right, for the end users. So understanding their feeling is also very important. Along with this, what else? क्या दिमाग में आता है? कुछ है और? जब हम यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं तो हमने जो फीलिंग इज बेसिकली एक्सपीरियंस, तो चलो हम यहीं पे लिख देता हूँ मैं, राइट? सो यूजर एंड एक्सपीरियंस वर्ड में लिखा हुआ है, राइट? सो यूजर इज बेसिकली द यूजर एंड एक्सपीरियंस इज द एक्सपीरियंस दैट द यूजर गेट्स व्हेन यूजिंग द प्रोडक्ट. Along with that, you will many a times you must have heard about these terms like usability, accessibility, right? Similarly, other things like, or the most important thing is the research. Fine. And then there are so many different research methods. तो इसके बारे में हम बात करेंगे. We'll learn all those things. Fine. So
इसके अलावा भी there's another keyword, context. Understanding the context is very important. Understanding the channel is very important. Understanding what else? Mental model. Mental model, very, very, very important. Understanding the patterns. Patterns means What is a behavior, pattern? behavior pattern plus design pattern. ओके, फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स का जो पैटर्न है, जो फ्लो है, जो एक्सपीरियंस है, दैट इज सेम राइट अक्रॉस ऑल डिफरेंट प्रोडक्ट्स, भले वो अमेजोन हो या फिर फ्लिपकार्ट हो या फिर कोई और प्रोडक्ट हो, द शॉपिंग एक्सपीरियंस इज सेम राइट, ओनली व्हाट चेंजेस is the branding, communication and those kind of things, but core experience is same. क्या होता है उसमें? कैटेगरी होती है, कैटेगरी में के अंदर में प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर पे नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे प्रोडक्ट डिटेल होता है, फिर ऐड टू कार्ट होता है राइट, फिर अगर वो लॉग्ड इन है तो देयर इज नो नीड टू आस्क फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड, अदरवाइज वो मांगते हैं और उसके बाद में देन पेमेंट होती है, देन सक्सेसफुल पेमेंट के बाद में प्रोडक्ट डिलीवर होता है, एंड इन दैट प्रोसेस जब वो डिलीवर हो रहा है या जब तक हुआ नहीं है तो the customers or the users can track, right, और finally डिलीवरी हो जाती है. So this is a pattern, this is an experience, this is a journey, right, a digital journey. So सबसे पहले हम जब यूजर एक्सपीरियंस समझते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड यूजर कौन है. ओके, सो व्हेन आई से यूजर, सबसे पहली चीज है हु इज द यूजर. You need to have a good clarity when you're working on any product or any experience. And यूजर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. यूजर के बारे जब हम समझते हैं, जब एक्सप्लोर करते हैं, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूजर का कि कौन है पहले तो, हु इज द यूजर. ओके, देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, मतलब इन द सेंस टाइप्स आई मीन. Target ठीक है, audience. yeah, and then also along with this, यूजर को समझ लिया, यूजर के टाइप को समझ लिया, एंड व्हेन आई से टाइप, इसमें हम बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं. डेमोग्राफिक्स, इसमें एज आ गया राइट, लाइफस्टाइल आ गया राइट, ये सब हम समझने की कोशिश करते हैं. एंड देन along with that we try to understand the core needs of the users. इसको हम, एक वर्ड है जो हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं जॉब्स To be done. टू बी डन. ओके, एक टर्म है, इसको याद रख लेना आप लोग. So उसको बोलते हैं हम jobs to be done, right? So we'll understand those things. So यूजर के बारे में हमने समझ लिया कि चलो कोई यूजर है, फिर हम क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं. We'll get into detail but I'm just starting this, okay? रिसर्च करते हैं. रिसर्च में क्या होता है? रिसर्च में हम सबसे पहले जाते हैं, मतलब देखते हैं कि अच्छा इस मार्केट में कौन कौन से एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, राइट. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज सेकेंडरी रिसर्च. इसमें हम क्या करते हैं, we basically do the research to figure out which products are already there in the market, okay, and so basically uh, available products in the market. So whatever is Who are there the, on the internet basically are out there already, which researched. That yes, all comes so together. secondary research को कभी कभी हम, we also call this as, not हर को but हाँ desk search भी बोलते हैं, desk research. ओके, सो कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट, फिर जाके उनके फीचर्स क्या क्या हैं प्रोडक्ट के, फिर जाके वी आल्सो रिफर और गो थ्रू एग्जिस्टिंग लिटरेचर, राइट, रिसर्च पेपर्स. वैल्यू प्रोपोजिशन. हाँ, वो हम लोग करेंगे ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. अभी तक हम अपने प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचे हैं, तो सेकेंड रिसर्च में हमने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके हमने वैल्यू प्रोपोजिशन समझ लिया, उनकी कंपनी जो है उनका मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट समझ लिया, उनके अचीवमेंट्स क्या है वो समझ लिए. फाइन, सो दिस इज व्हाट वी डू. सो वंस दिस इज डन वी गेट टू दिस सेकेंड पार्ट, second thing, that is the primary research.
हमने ये समझ लिया कि चलो मार्केट में तो ये चीज चल रही है, राइट, बट हम मार्केट के लिए प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम मार्केट के लिए बना रहे हैं, बट मार्केट से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द टारगेट यूजर्स, द एंड यूजर्स। तो हम इसमें एंड यूजर्स से बात करते हैं, समझ उनसे उनकी नीड समझने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर रिसर्च। सो वी कंडक्ट सर्वेज, ओके, इंटरव्यूज टू अंडरस्टैंड द यूजर्स एंड देयर नीड्स। इसके बाद में देयर आर फ्यू अदर थिंग्स दैट वी डू टू बिल्ड अप द प्रोडक्ट, सो विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स इन द फ्यूचर सेशंस। बट हाँ, इसके बाद होता है कि डिजाइन करते हैं हम, बट बिफोर डिजाइन वी आइडिएट, वी डिजाइन, वी प्रोटोटाइप एंड देन वी टेस्ट, राइट। तो यहाँ तक तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई थिंक कि दिस इज इजी, राइट, दिस इज वेरी बेसिक। Yes, sir. Fine. So the first thing was like, what is user experience? So you need to have a good understanding of what is user experience. Once you have this understanding, you'll be able to come up with a good product. तो चलो, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, एंड नाउ प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस, ओके। Yes, sir. Let me remove all this. तो मेरा दूसरा जो सवाल है वो है, okay, so why do you want to become a UX designer? Why only UX? Sir, Please participate, guys, huh? sir, sir, I'm audible? Yes, Shivraj, yes. Yeah. So, I like to help others, so I want to be a designer. तो फिर सोशल सर्विस करते हैं नहीं? No, sir. Means actually, I like to help others through products. Okay, so you're saying you want to help others through products. So fine. So let me see. Actually, when I just see the people when they're struggling to do some work and they're not able to do because the faulty product or can say Mhm. incomplete product. So that case, I can help them. So I can also tell you the example. So yesterday I was there on a railway station, and the train was arrived in 5 minutes, and the girl was not able to book her ticket through a machine, and finally she was unable to board in. So that was a pain point. I just understand, and I think I can solve it. So Okay. सर सिंपल एंड इजी टू यूज प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं सर, जिससे कस्टमर गोल्स और बिजनेस गोल दोनों अचीव हो पाए। Easy to use products. Okay. Business and user goals. Fine, perfect. ये बढ़िया है। शिवराज, आपको भी बढ़िया था। So now this is what you want to do, right? तो easy to use product बनाना चाहते हैं। Fine. What else? और भी तो कोई कारण होंगे। सर स्टोरी टेलिंग Okay. Want to use storytelling. Okay. Or make use of storytelling. Okay. और कोई? स्टोरी टेलिंग पे ही जाना जाता है ना सर? हाँ, वो भी है, ठीक है। Make use of storytelling. Okay, fine. What else? What else? In my case, I feel इसके like थ्रू जो I'm अदर यूजर्स होते हैं, जो अदर यूजर्स होते हैं उनके माइंडसेट को समझना और उनके वो कहते हैं ना कि ट्राई करना कि क्या है, उनके क्या नीड्स है, और अलग अलग लोगों को समझना, उनके बिहेवियर्स को समझना। तो इट्स ऑल्सो हेल्पिंग योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। सो आई रियली लाइक दैट पार्ट। Okay, so you like that part, so that's why. Okay, needs, behavior of users. So कॉम्प्लेक्स perfect. ठीक है। को सिंपल में बदलना। I didn't get that part. Sorry. सर कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ। चीजों में कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको सिंपलिसिटी में कन्वर्ट करना। Wow, wonderful, wonderful. So simplifying
So removing complexity by simplifying. SIMPLIFYING. Perfect. ठीक है, ये भी अच्छा है. और क्या है? क्या I mean, फिलहाल हाँ, sorry. ट्रेंडिंग हाँ, okay. Trending profession है in ये. my case, why I want to become a user experience designer is because I've always I'm an innate person who has an eye for the design and art both. So I was an artist, like Okay. this is an innate thing in me. And as I was growing up, I had science and there was logic, and you're doing engineering. So it just design. What I believe is some engineering gave me a tech perspective, and because I'm innately artistic, so design and art are different thing, but I'm just coming to and engineering gave me a tech perspective, and this and a logic perspective too. So design, I believe, is like the overlapping force between these two domain, as well as like an artistic perspective give you a thing that, like, because I used to go through photos and all that because I'm looking for something nice, and I'm naturally empathetic and understanding and all those things. There's just one point that I feel like I need to work on, and that is collaboration, because I did not collaborate. Otherwise, all those qualities which I find in it should be in a designer, like empathetic, understanding, logical, I feel like I have. So I feel like I can, with good mentorship and all that, with like hard work, I can become a good designer. That's why, and that's why I've switched. I was into different field earlier, so, but then I've switched to user experience designer, and I've been teaching myself over the videos and all those things. So, I've already done the course, I've already made the case study, but I felt like there's a lack of mentorship, which I'm expecting from this cohort to fulfill. Sure. Yeah. Perfect. This is good. So basically, you're trying to combine whatever you've learned till now. So you Yeah, I then have, you're I have engineering. certain So expectation. I'm going to tell you that because yeah. there are still, some gaps in my understanding. Yeah, when I basically when I'm applying all those whatever I have learned now, because user experience design, this job is highly skilled. Like, you have to be very skilled to do this job. So when I'm applying all those knowledge, in real time into application, suppose trying to understand and I'm doing some app critic, so I'm finding it quite difficult to understand and join connect all the dots. So that's why, like, this is what I'm expecting from this cohort here. Got it. Perfect. So we'll try And to sir, deliver value. Yeah. and sir, actually, there is only one field like UX in which I can apply my design interest as well as technology, and Very much. we can combine both and help or try to make users life easy and happy. So I think that. Okay. Perfect. Anybody else? Do you want to contribute anything? And one more thing, I feel like, this job will make you a good human being because your limitations will be obliterated continuously, because there will be some new challenges all the time with your work. Yes. So, yeah. Okay. Reduced cognitive load. Yeah, please. Reduced cognitive load. Release. Realize that release, right? Reduce cognitive load. Okay. So this is good point. Evolve as a person. This is also great. Okay. Makes use of storytelling. So now, I mean, see, as an individual, we have some skills, right? Earlier, like I see, I mean, like my father, I mean, like his job was what? I mean, like he used to do service, and he used to work in a company and like work there for like 40, 50 years. So the thing is that he used to do similar kind of job every day, right? And that for this generation, it's very difficult. So we are in a phase wherein like we want to work on new things, otherwise we get bored and all. So this design, okay, the design field, the profession gives you that freedom. I mean, when you work as a designer, you can work on different industries, or for different industries and on different products. So you get to explore a lot. You keep learning new things, and that is what we need as designer, right? So I think like that's why this is a very interesting profession, and anybody who's getting into this,
yes, we'll have to like continuously keep learning, because that's how, otherwise will the designer will become obsolete. I mean, they won't stay relevant. So yes, as a designer, you have to always keep updating yourself. So for example, like when I started as a graphic designer. Okay, and when I started, I used to use tools like CorelDRAW and Illustrator. Those kind of Quark Express was one tool that I used when I started. But the thing is that the industry kept evolving. So I moved from the graphic design to the advertising, from advertising to the web to the digital to the UX, right? And if I had not updated myself, I would have not been here. So the thing is that this field is going to be very challenging, but if you continuously keep if you'll keep updating yourself, अगर अपने आप को update करते रहोगे, so life will become not easy, but yes, it will become very interesting. Okay, so that's why I got into UX. Like, अच्छा मैं सीधा UX में नहीं आया, but I started as a graphic designer. So I got into design. Why? Because I loved playing with colors and fonts. So my uncle, my elder brother, I mean everyone is designer in a family. So वहां से मेरे Innate को thing. just You too have a innate thing for like colors, aesthetics, and all that. yeah. So the thing is that I got into design. मेरा कारण क्या था? क्योंकि मुझे कलर से टाइपोग्राफी से मजा आता था खेलने में. ओके, और जब एक पोस्टर बनाया था, अपने लिए बनाया था, तो मैं अंकल सॉ दैट, तो बोले कि वाह बड़ा अच्छा बनाया है. तो उससे मेरा थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि अरे मैंने अच्छा बनाया, तो लेट्स क्रिएट मोर, राइट? सो उस समय मुझे यूजर एक्सपीरियंस के बारे में कुछ नहीं मालूम था, बट यस, बिकॉज ऑफ दैट praise and all, I got into design. Okay, and also my love for typography and colors. Correct. So the thing is that there should be one reason. And also इसमें वो भी है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि जैसे इसमें कहाँ लिखा हुआ था, इवॉल्विंग ट्रेंडिंग प्रोफेशन, राइट? सो दिस इज ट्रेंडिंग, एवरीबडी इज गेटिंग इनटू यूएक्स, एंड द future is going to be bright. Future is will be bright for future will be bright, right? Why? Because earlier people used to have like physical product, but now everything, be it the product or the service, everything is getting digital. So there will be continuous need, there will be like need for good designers in the future. अभी भी है, फ्यूचर में भी होगा, राइट? अभी तो कुछ कंपनी डिजिटली ट्रांसफॉर्म हुई है, अभी आगे जाके तो और होंगी. सो इस ये प्रोफेशन बढ़ता जाएगा, इस इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी. तो राइट टाइम टू गेट इनटू द इंडस्ट्री. बट हाँ, यू विल हैव टू स्टे रेलेवेंट. आपको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा, तभी आप इवॉल्व करोगे और आगे ग्रो करोगे. आप अच्छे प्रोडक्ट बना पाओगे, अच्छी कंपनी में काम कर पाओगे और अच्छे पैसे भी बना पाओगे, राइट? एट द एंड इट्स ऑल्सो अबाउट मनी, राइट? So cool. So now let's get to the third part. And the third part is, शायद को reframe करना पड़ेगा क्वेश्चन को, but let's see. There should be two, right? So assuming you are still in school and you have been asked to organize a dance competition, okay? How would you go about, how would you plan the same? Perfect. ये बताओ क्या करोगे? आपको एक टास्क दे दिया गया, तो what will you do and how will you plan? Steps क्या क्या होंगे? Anybody? Wait. First of all, we have to decide the song for the dance. Then we have to select the students or a group. Okay, wait. Select song. Select student. Group. What else? Yeah. Okay. Anything else? Yeah, sir. Yeah, actually, here actually, okay. So I will just try to understand who is actually my team first. How many? Okay. Who is my team? Okay. Then what is size of my school and how many students like singing? Yeah, right. Competition. To dance, not sing. Dance. No? Yeah. Okay. और कुछ? Then budget. Okay, budget. Menu. Okay, perfect. I'm just combining, huh? और So, क्या? and according to the number of participants and viewers, we have to decide the place. Okay, तो venue हो गया. Okay. Yeah. Let me decide place.
then you practice, and then if there are some people who are not very good, who are not performing well, you are going to remove that in order to have a better filter and participants, and then you practice, and then then performance. and also attractive prizes, so the more students can participate in dance competition. Okay, so invite more students, right? Okay, what else? I think the theme is also important after all those things are decided. Okay, perfect. Select theme. I think we have to select the theme in the first scenario. Yes, Depending on correct. that, we have to select the song and other things. Wonderful, Great. perfect. So we'll select the theme and then other things like the song and all. Perfect. What else? टीम मैटर करेगा ना Team. Judge. कितने Will The मेंबर judges. Okay. Okay. Select team बनाएंगे. और क्या होगा? The और कुछ है? judges who are going to be our judges. Okay, judges. प्राइज है ड्रेस कोड Okay. ये मैं क्यों करा रहा हूँ ये? I mean, like, why this question and why I'm making you do all this? Because the process is also important. Okay, while process. Yeah. So that's the Gather key the here. information. Key here, process. So that's why I'm writing it separately. Okay. What else? Sorry, अभी क्या बोला आपने? Yeah, to gather the information. Okay, gathering information, right? Gather Yeah. information. We'll see like what kind of information, but yes, this is a good point. और क्या? planning We are going to be our guest. dance competition. थोड़ी सी आवाज कम आ रही है. Planning before the dance competition. Planning before dance competition. Okay. अभी और कुछ बोलो. And हम स्टेटमेंट our दिया है guests. सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाना है हाँ. Sorry. प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करें इसलिए आपने पूछा है वो. Yes. Problem statements कैसे? Okay. So अप्रोच हमारा पूरा स्ट्रक्चरल रहे थ्रू आउट द very nice. PPPROACH approach structural रहे. Okay, wonderful. Okay, so चलो अब मैं बताता हूँ. तो सिंपल चीजें हैं, मतलब हम अगर लाइफ में कुछ कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, द प्रोसेस सेम रहता है. ओके, अभी हम और एग्जांपल पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एनीबडी कैन बिकम अ यूएक्स डिजाइनर. ठीक है, बट हाँ, अच्छा बनने के लिए आपको कुछ मास्टरी करनी पड़ती है कि आपको भी रिसर्च आता है, मुझे भी रिसर्च आता है, बट हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा अच्छा आता हो, इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंसड हूँ, राइट. बट अब मान लो 2 न्यू फ्रेश स्टूडेंट एस्पायरिंग डिजाइनर्स है. अब उसमें से एक को ज्यादा अच्छी तरह से रिसर्च करने आता है और स्ट्रक्चरल वे में करना आता है, तो ही विल इवॉल्व मोर, राइट. वो आगे ज्यादा बढ़ेगा, ही विल ग्रो एज अ डिजाइनर देन द अदर पर्सन. सो द थिंग इज दैट ये जो अप्रोच बोला है, ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको समझना, दैट्स द कोरिया. उसके समझने के बाद में क्या अप्रोच रहेगा, ओके, उस अप्रोच को किस तरह से स्ट्रक्चर देंगे बाय फॉलोइंग अ प्रोसेस. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस, हमने यहाँ पे सिर्फ ये समझा कि डांस कंपटीशन है, बट कौन है, क्या कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ है वो, स्कूल के अंदर है, स्कूल के बाहर है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, क्या है, आपको गैदरिंग करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, राइट. यू विल हैव टू गेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. सो ये दो दिस इज, आप लोग लगेगा कि ये डिजाइन का कुछ इसे सीखोगे नहीं, बट यू लर्न डिजाइन फ्रॉम योर लाइफ. ओके, इतना सिंपल बना दो डिजाइन को कि आप हर दिन डिजाइन को यूज करो, इट विल बिकम इजियर फॉर यू. आप डिजाइन का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो. फॉर एग्जांपल, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो. देयर इज अनदर क्वेश्चन, आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर. बट हाँ, इसमें पहले क्या है, देखो, अज्यूमिंग यू आर स्टिल इन स्कूल, सो इमीडिएटली हाईलाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स. स्कूल. नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइज अ डांस कॉम्पिटिशन. आप क्या करना है, प्लान करना है. ओके, सो मेरे को ये समझ में आया कि स्कूल में हो रहा है, डांस कंपटीशन हो रहा है और प्लान करना है, और मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, राइट. सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं पूछूंगा कि लाइक, ओके, सो डिटेल्स अबाउट द डांस कंपटीशन. सबसे पहले
COMPTITI। ओके, सबसे पहले मैं पूछूंगा कि डांस कंपटीशन में क्या हो रहा है, क्या होना है, कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, राइट? सो वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कौन पार्टिसिपेंट्स होंगे। पार्टिसिपेंट, लेट्स से बिफोर दैट की इंटरनल इवेंट है, एक्सटर्नल है। ओके, एक्सटर्नल मतलब इंटर स्कूल। ओके, इतना समझ आना आप लोग। एंड इसके बाद में क्या पार्टिसिपेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, पार्टिसिपेंट्स रिक्वायरमेंट, डेट कब होगा, ये कितना टाइम है, क्योंकि उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे, राइट? डेट कब है, उसके बाद में कहाँ होगा, लाइक यू मेंशन दैट, राइट? वेन्यू, कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और भी लिखते हैं, दूसरे में लिख देते हैं, राइट? उसके बाद में आपने जब ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर ली, ठीक है, अगर इसमें केस 1, अगर ये इंटरनल है अपने स्कूल के अंदर में, तो क्या होना चाहिए, ठीक है? केस 2, यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? अगर एक्सटर्नल है तो क्या प्रोसेस होगा। आप इसमें आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, उसके बाद में आप बोलोगे कि परफेक्ट, नाउ वी हैव डिसाइडेड कि हमें अभी पता लग गया कि ये इंटरनल है, एक्सटर्नल है, कितने पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल है। तो उसके बाद में आप क्या करोगे, हाँ, यहाँ पे आप थीम के बारे में पूछोगे, राइट? यहीं पे पूछ लोगे। इसके बाद में आप क्या करोगे, आप अपनी टीम फॉर्म करोगे। ओके, टीम फॉर्मेशन, फिर जाके स्टूडेंट सिलेक्शन, राइट? उसके बाद में और क्या करेंगे, फिर जाके इसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे, राइट? फिर फिल्टर करेंगे, फिर प्रैक्टिस और करेंगे, राइट? इसके बाद क्या होगा, आप फाइनल डे में परफॉर्म करोगे, राइट? परफॉर्मेंस डे विल परफॉर्म, do the performance or give the performance, or basically perform, right? So let's like perform करोगे। उसके बाद में यहाँ पे जजेस जो होंगे वो लोग प्राइज देंगे, विन और लूज, राइट? एंड यहाँ पे जैसे ड्रेस कोड भी आप लोगों ने बोला था, करेक्ट? सो द आइडिया हियर इज लाइक दे आस्किंग दिस क्वेश्चन, आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट कि आप कुछ भी हो, लाइफ का इवेंट हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। और जब प्रोसेस फॉलो करोगे तो एवरीथिंग विल बिकम ईजी। और यहाँ पे जब आप कुछ काम कर रहे हो, सो यू शुड मेक यूज ऑफ, let me make use of 5 W's and 1 H. Okay, so when I was doing my masters in mass communication, so हमारे प्रोफेसर ने हमें ये बताया था कि लाइफ में अगर आप इसका यूज करना सीख गए ना, तो आप लाइफ आपकी बहुत इजी हो जाएगी एज अ डिजाइनर। ओके, सो व्हेन आई से 5 W's, तो 5 W's क्या होते हैं, कोई जानता है? Who, why, Where? Who, what, why, where. ओके, हु, व्हाट, एंड एक और तो कुछ, हु, व्हेन। आप इससे जितने क्वेश्चन बना सकते हो बना लो इसके बारे में पूछने के लिए, और कितना आसान होगा। हु, ओके, हु आर पार्टिसिपेटिंग, व्हाई दिस इज हैपनिंग, वेयर दिस इज हैपनिंग, what is the objective, what is the theme, when is this going to happen, and how do we plan about it. So right, I mean, like, you can create a lot of questions, many questions using these. So in life, try to make use of these. Okay, whenever you're creating a design, working on a design, make use of 5 W's and 1 H. H is how. Okay, तो इसका इस्तेमाल करना लाइफ में शुरू कर दोगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी एज अ डिजाइनर। परफेक्ट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। और हाँ, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कुछ कर रहे हो, राइट, इट शुड ऑलवेज बी प्रोसेस ड्रिवन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, यू शुड अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, यू शुड अंडरस्टैंड द ब्रीफ। अगर वहां पे रॉन्ग हो गए तो फिर तो गए, फिर नहीं बन पाएगा कुछ भी। परफेक्ट,
So, okay, cool. Next, let's go to the next question. Okay, now this is next Next question. Okay, perfect, good. So when did you last buy a physical product? What was your process? ये छोटी छोटी चीज लग रही होगी, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, बट यही आपको बेटर डिजाइनर बनाएंगे. एक्चुअली मनप्रीत, जो ये यूएक्स है ना, वो हमारी रियल लाइफ में इतना इंक्लूडेड है. यस, तभी तो मैं कह रहा हूँ कोई भी यूएक्स हाँ. डिजाइनर बन सकता है. कुछ भी होता है, मतलब अगर मैं अपना बेडरूम की बात करूँ, उसके डेकोरेशन आवाज से आ लेके रही? एवरीथिंग सब कुछ मैं कर सकता हूँ. तो उसमें भी एक यूजर एक्सपीरियंस आ जाता है कि कौन सी चीज मेरी अलमीरा कहाँ होनी चाहिए, मेरा बेड कहाँ होना चाहिए, मतलब मेरे लिए कितना फ्रेंडली हो सकता है वो. सेम थिंग अगर मैं कोई फ्रीज या फैन या टीवी कुछ भी ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं देखूंगा उसमें वारंटीज देखूंगा, या कितने वॉट का है, कितना वो लेगा, कितना कंफर्टेबल इंचेस जो है मेरे बेडरूम के लिए जो है अच्छा रहेगा मेरे को देखने के लिए. ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं. तो यूजर एक्सपीरियंस तो हमारी लाइफ में हर पार्ट में, तो इसलिए तो इंटरेस्टिंग होना ही होना है. हाँ, तो वही है, तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ. हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सर अभिषेक बोल रहा हूँ सर. मेरा अभिषेक, हाँ जी. कैसा था सर, मेरा यूजर जर्नी ये था सर. सबसे पहले तो मैंने प्रोडक्ट डिसाइड किया कि लेना क्या है. ओके. प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद सर Decide. मैंने रिसर्च, हम्म. फिर मैंने डिसाइड करा कि सर मतलब किस सोर्स से लेना, ऑनलाइन सोर्स से लेना या ऑफलाइन सोर्स से लेना, जो भी मेरे पास कंफर्टेबल रहेगा वो मैं ले लूंगा. देन मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करा थ्रू ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मैंने रिसर्च करा. फिर मैंने देखा कि किस तरह के स्पेसिफिकेशन मुझे चाहिए, तो मैंने रिव्यू उनके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज से मैंने स्पेसिफिकेशन देखा कि कौन सा मेरे लिए सूटेबल रहेगा. और उसके बाद से मैं कंक्लूजन पे आया कि हाँ, डिसाइड कर लिया मैंने कि ये वाला प्रोडक्ट लेना है. देन मैं उसको कार्ट में ऐड करने के बाद मैंने चेकआउट के लिए पेमेंट किया, और उसके बाद ऑर्डर डिलीवर होकर मेरे घर पे आया सर. ओके. ओके, सो ये एक हो गया, राइट? अभिषेक ने बोला ये ऐसे वो करते हैं. और कोई? डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग हियर? Yes, ma'am. First, I want to list out my requirement. For example, fridge I'm going to buy. How much usage I want? How many liters I want? First, I list out the तो ये हो गया है ना, स्पेसिफिकेशन. yeah. डिसाइड. सो बेसिकली पहले वो करेंगे, पहले हम करेंगे डिसाइड द प्रोडक्ट. ओके. Of okay, so this can be, let me change this to, like, select the channel or the medium. Decide the product is I guess basically budget is also like primary, like it comes first when you, whether it will be 20K, 30K. So budget, and then you do the research because it should be under 20K or 30K, whatever. perfect. So Yeah. Define. So how do you say? कैसे बोलेंगे? Define the budget. No. yeah, चलो, define ठीक the है. budget. Perfect. Okay, define the budget. Okay. Then decide the product, define the budget, select the medium. Then you do research on Okay. on like online or whatever, offline also. So when I think you do the online research and then you make a list ki these are the like all the best 5 or best 3 or whatever. And then like if that depends, actually you're buying like something which doesn't require a lot of money or whatever. So it depends upon the target user. So they want to see, like they want to check the online prices, or they want to go, suppose somebody is buying Whirlpool washing machine, so there might be that showroom is nearby to their home, so they would go offline and see the prices. That's what I'm saying, depends upon the person. Perfect. And somebody can buy it online also, and there are people that I know that that would not do any research, so there are different target users. So yeah, so they will go to the physical store and see, and then suppose the person has purchases from online, and then you purchase it add to cart, and you purchase it, and then you see when it is coming, like you check it's coming in 2 days or 3 days, and yeah, and then you follow that, like you track the order, and then the products get delivered. Perfect. Yeah. तो हम क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि अच्छा हमने प्रोडक्ट क्या खरीदना है. सो नाउ लेट्स से इन दिस केस वी वांट टू बाय फ्रिज. सो परफेक्ट. सो प्रोडक्ट डिसाइड किया, देन वी बेसिकली define or basically create list, right? कि specifications क्या क्या होने चाहिए, product descriptions क्या क्या होना चाहिए, मैंने basically you go through all this thing, right? तो ये करने के बाद में आप क्या करते हो?
अब हाँ Manpreet, इस I just want to add one thing in the starting. राइट First of all, you have to decide the requirement, that is like for whom we are purchasing the product, who is the user of the product, ओके या and then we can go with all these details. perfect okay perfect so let me define the product okay define the user understand the user and need Yeah, requirements of the user actually. yeah and needs okay so good If you to buy the fridge, then we have to decide for how many persons it is going to be used, and okay what perfect kind of perfect mix. एंड ऑल्सो आपके घर में जो जगह है जहाँ फ्रिज रखनी है आपने उसका साइज क्या है राइट वो भी देखोगे कितना वो Yeah. लंबा होना चाहिए सो ऑल दोस थिंग्स Specification, it So- does come in specification, no? yeah constraints also you need to Yeah, understand constraints, right? CONSTRAI yes perfect so Sir, हाँ also we as per my experience, we also look for any we can a festival, we can say offers. perfect हम पैसे बचाना चाहते हैं राइट हमेशा Yes, sir. And actually, everyone do that. नहीं नहीं दिस इज गुड हमें लाइक एकदम करना है क्यों पैसे देने हैं हमने है ना तो परफेक्ट है तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है राइट तो हमने एक प्रोडक्ट खरीदना है तो हमने ये प्रोसेस फॉलो किया एज एन इंडिविजुअल मैं भी करता हूँ आप भी करते हो पूरी दुनिया करती है राइट नाउ अब मान लो कि आपको एक कंपनी है कोई XYZ कंपनी वो फ्रिज बेचती है टीवी बेचती है फैंस बेचती है एंड अदर सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स अब उनके लिए आपको एक वेबसाइट बनानी है राइट सो नाउ सिंस यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग वुड यू बी एबल टू डू गुड वर्क कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या प्रोसेस फॉलो होता है तो अच्छा बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे Yes, sir. You would want to. नो यस वांट टू तो ठीक है वांट बट अगर ये नॉलेज आपको नहीं होती तो आप नहीं बना पाते राइट तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जर्नी की कि एक यूजर है कैसे डिसाइड करता है ओके अब और उसके बाद में वो किसके क्या कंसेंट्स होते हैं वो कैसे मीडियम सेलेक्ट करता है वो कैसे स्टोर में जाता है चीजें देखता है अब द थिंग इज दैट सी ऐसा डिजाइनर यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि जो यूजर है राइट और कस्टमर है वो ऑनलाइन अगर जाता है तो वो प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकता फील नहीं कर सकता राइट और उसको थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं इसमें वारंटी का क्या होगा अगर कुछ खराब होगी तो मुझे ऑनलाइन किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा वो क्लैरिटी नहीं होती है सो दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स राइट बट इन द फिजिकल स्टोर क्या है मैं जाके खोल के चेक कर सकता हूँ क्या साइज है सब कुछ मेजर कर सकता हूँ सो इन दिस केस आई मीन लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम डिफरेंट मीडियम डिफरेंट चैनल के लिए बना रहे हैं तो क्या हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं ओके एंड हम उसको कैसे हम उसको अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग सॉल्यूशंस और राइट ऑफरिंग अब आपका ऑनलाइन स्टोर है और घर के पास भी स्टोर है राइट तो आप ऑनलाइन स्टोर में कैसे लोगों को लेके आओगे क्योंकि वो तो सामने जाके स्टोर से ले लेगा फिजिकल स्टोर से ऑनलाइन कैसे लेके आओगे बाय प्रोवाइडिंग मोर वैल्यू बाय शोइंग trust. building trust by highlighting on things like we are there for you return without any question asked okay free warranty xyz discount okay extra discount so if it's like let's say कोई 30,000 का है तो we'll give it like 28,500 if you buy online right same ही store है free delivery yes all this value you'll have to show them that yes we care for you okay so you got this point right so basically मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ में हम जो भी काम कर रहे हैं जैसे छोटे छोटे काम या बड़े काम जैसे ये फ्रिज वाला खरीदने वाला काम है तो ये भी एक प्रोसेस ड्रिवन होता है ओके और हमें एज एन इंडिविजुअल एज अ पर्सन हमें मालूम है कि प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं लोग तो अब जब हमें ये हमें जब मालूम है कि लोग क्या फॉलो करते हैं प्रोसेस तो ऐसा डिजाइनर हमारे लिए आसान हो जाता है प्रोडक्ट बनाना ओके बट हाँ अगर हम इसमें डीप चले जाएं और बेसिक बारीकियों में काम करना शुरू कर दें कि वो कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है लोगों के कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होते हैं
राइट। अब जैसे बजट का कंस्ट्रेंट है तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट, जब मैं प्रोडक्ट की अपनी ऑफरिंग बना रहा हूँ। अब उसके बाद में ऑनलाइन और ऑफलाइन मैंने डिस्कस किया अभी। उसके बाद में रिसर्च बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ऑफर एंड डिस्काउंट दूंगा उनको ताकि वो, और इंट्यूटिव ऑफर उनको दूंगा ताकि वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ से खरीदना खरीद सकें, राइट। उसके बाद में अगर मान लो किसी ने ऐड टू कार्ट कर लिया, आज ऐड टू कार्ट किया, 2 दिन तक उसने खरीदा नहीं, तो मैं उसको कैसे एंगेज करूं ताकि वो पुट खरीद सके, या पुश नोटिफिकेशन सर भेज के। perfect, yes, हाँ, तो नोटिफिकेशन भेज के। सो नाउ सी why I'm explaining all this, why, because whenever you're building something आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा, पूरी जर्नी समझनी पड़ेगी, और हर एक पार्ट पे, हर एक जर्नी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं या फिर क्या बोलेंगे स्टेज है, तो स्टेज पे हम उनके साथ एंगेज कैसे बेटर कर सके, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो बेसिक तो आपको प्रोसेस मालूम ही है, बट वो नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, वो नजेस कैसे क्रिएट करने हैं, दैट you'll have to understand, learn, and you can do that only by understanding more about people. Getting it? So that's why प्रोसेस, यूएक्स प्रोसेस में हम यही करते हैं। सिंपल सी चीज है, हम लोगों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, लोगों की नीड समझने की कोशिश करते हैं, और लोगों से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं ताकि उनकी जो भी इवॉल्विंग नीड्स है या फिर नीड्स, क्योंकि नीड्स चेंज होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है, तो हम उसको और बेटर समझ सकें और उसके हिसाब से अपने ऑफरिंग को अच्छे तरीके से पैकेज कर सकें और उनको दे सकें। गॉट इट? सिंपल। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ओके, ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसको हम ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, बट लेट मी पुट द क्वेश्चन हियर। सो नाउ दिस इज सिंपल। नाउ व्हेन, ओके, सो नाउ को हटा देते हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू बॉट एन आइटम ऑनलाइन? सर हम जब भी कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि कस्टमर के शूज में रह के हमें डिसाइड मतलब सोचना चाहिए। लेकिन सर जब एक क्वेश्चन ये था कि सर उसमें अगर हमारे पास कोई बजट नहीं है कि हाँ हम यूजर रिसर्च कर पाए, यूजर नीड जान पाए, तो सर हम खुद को ही एज ए यूजर, क्योंकि हम भी तो एट द एंड एक यूजर ही हैं कहीं ना कहीं, तो हम अपने हाइपोथेसिस के बेसिस पे भी तो सर कुछ प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं ताकि हम एटलीस्ट टेस्ट कर पाए कि हाँ जो हमने सोचा है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सर ये करना ठीक रहेगा क्योंकि हाइपोथेसिस भी तो एट द एंड एक प्रोसेस। परफेक्ट है। सो कंपनी के पास बजट नहीं होता है, राइट। सो हाँ, आप अपने आप को समझ लो, वो अच्छी चीज है, बट डू रिमेंबर दैट यू आर नॉट द यूजर, राइट। तो आप क्या करो, अब अपने फ्रेंड से बात कर लो, अपने फ्रेंड के फ्रेंड से बात कर लो, अपने फैमिली मेंबर से बात कर लो, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ लो, राइट। खाली अपना समझने से जो बनाओगे वो सिर्फ ऐसा बनेगा कि जो अपने लिए बना रहे हो, बट ऐसे 4-5 लोग जो आपको फ्री में सजेशंस, फीडबैक, गाइडेंस दे सकते हैं, राइट। तो जब आप इनसे भी जब इंफॉर्मेशन ले लोगे, इनकी भी अंडरस्टैंडिंग कर लोगे नीड्स की, तो यू विल बी एबल टू डू गुड, बेटर देन खाली अपना समझ के जब बनाते हो तो। बिल्कुल। फॉर दैट मनप्रीत वी कैन मेक सब सर्वेज, है ना, राइट। और उसके अकॉर्डिंग जो एक्यूरेसीज आती हैं वो फीचर्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा है ना कि हर कस्टमर से कुछ ना कुछ हमें एक फीचर ऐड ऑन मिल सकता है उसमें। हाँ, फीचर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नीड्स। ओके, फीचर आखिरी में डिसाइड होता है। सो इनिशियल फेज में जब रिसर्च कर रहे हैं तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स। ओके, तो हाउ यू प्रेजेंट इट आल्सो मैटर्स। फाइन, चलो इस छोटे से क्वेश्चन का जवाब दो कि इसमें मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू बॉट एन, ये सिंपल है, कभी भी बोल सकते हो। व्हाट वाज इट? ओके, क्या था वो, एंड व्हाई डिड यू बाय ऑनलाइन, और वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से क्यों खरीदा? Hello. Yes. Yeah. So last item I bought online is my smartwatch. So for that, फर्स्ट यानी कि सबसे पहले तो मैंने क्या करा, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे, रिव्यूज देखे कि जो मेरा बजट है उस बजट के अंदर टॉप वॉचेस कौन सी है या बेटर वॉचेस कौन सी है। फिर वहां से जब मैंने रिव्यूज देखे, उसके बाद फिर वहीं से लिंक्स मिल जाते थे वेबसाइट्स पे जाके चेकआउट करता था कि जो रियल यूजर्स है जिन्होंने यूज करी है उनके फीडबैक्स कैसे हैं। फिर उनके बेसिस पे फिर मैंने को जो फायरबोल्ट की पसंद आई थी, तो फिर वो मैंने फायरबोल्ट की ही वेबसाइट से खरीदी थी। रीजन ये था कि वो या तो फायरबोल्ट पे अवेलेबल थी या फ्लिपकार्ट पे, बट जो फायरबोल्ट की खुद की वेबसाइट थी वहां पे प्राइसिंग उनकी काफी कम थी और फ्लिपकार्ट पे वो काफी महंगी थी।
So that was the complete process. Okay. Yeah. Fine. Okay, cool. So anybody else? सर मैंने लास्ट टाइम सर एक कोन एंड टू की कंपनी से एक गिफ्ट पैक खरीदा था चॉकलेट का। तो सर उसका मेरा बाइंग जर्नी ऐसा था कि सर सबसे पहले मैं उसको प्रोडक्ट के बारे में मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला था। तो मैंने इंस्टाग्राम पे ही सर कुछ फोटोज रील्स देखे थे प्रोडक्ट कैसा है, और इंस्टाग्राम पे ही सर जो मैंने टैग पीपल वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे जाके थोड़े बहुत रिव्यूज देख लिए थे उस प्रोडक्ट के। रिव्यूज देखने के बाद सर मैंने डिसाइड करा कि चलो हाँ लेते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे ही जो उनका डिस्क्रिप्शन पेज में लिंक वो लोग देते हैं अपनी वेबसाइट की, मैं वहां जाके रिवर्ट हो गया, रिडायरेक्ट हो गया उनकी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद सर मैंने थोड़ा बहुत चेक करा कि प्रोडक्ट कैसा है। फिर मैंने अदर सोर्स पे भी चेक करा कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है कि नहीं वो प्रोडक्ट, क्या प्राइसिंग डिफर कर रही है दोनों की। तो सर मैं कंक्लूजन पे आया कि सर जो वेबसाइट है उस पर प्राइस थोड़ा कम था, तो मैंने वहां से डिसाइड किया कि हाँ चलो यहाँ पे ले लेते हैं। फिर मैंने चेकआउट किया, और चेकआउट एक्सपीरियंस में उतना ज्यादा वेबसाइट क्लीन नहीं थी, बट हाँ मतलब खरीदने लायक थी कि हाँ चलो खरीद सकते, शायद बेसिक उनका एमवीपी था वो। और फिर मैंने वहां से खरीदा, और एड्रेस वगैरह डिटेल्स डालने के बाद चेकआउट कर दिया, पेमेंट कर दिया। रेजर पे के थ्रू का इंटीग्रेशन था एपीआई का। फिर मैंने पेमेंट किया और ऑर्डर डिलीवर हो गया। Perfect. Okay. So cool. So now let me explain. So मैंने ये क्या पूछा, मैंने पूछा लास्ट टाइम यू बॉट एन आइटम ऑनलाइन, राइट? तो ऑनलाइन मैं कब खरीदूंगा? बिना फिजिकल स्टोर में जाके बिना विजिट किए, जब वो प्राइस जो है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम होगा, राइट? अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है 5,000 का, तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि 5,000 मेरे लिए उतनी बड़ा अमाउंट नहीं है। ओके, बट समवन लाइक अ स्टूडेंट जिसके पास मान लो टोटली 7,000 रुपये सेविंग है, राइट? उसने बड़ी मुश्किल से सेव कर रखी है, उसके लिए 5,000 इज टू मच। तो वो क्या करेगा, वो ऐसे ऑनलाइन स्टोर में जब तक उसको वो कॉन्फिडेंट नहीं है उस प्लेटफॉर्म के बारे में, तब तक वो 5,000 इन्वेस्ट नहीं करेगा। सो इसमें क्या हम से समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि यूजर जो है उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप किसको टारगेट कर रहे हो, राइट? और आपका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कितना है, दैट्स अनदर थिंग। द सेकंड थिंग इज लाइक ट्रस्ट फैक्टर, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो हमने ये समझा कि पैसे इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट है, यूजर कौन है वो इंपॉर्टेंट है, एंड उस प्लेटफॉर्म से ही क्यों खरीदा आपने, राइट? जैसे कि वही प्रोडक्ट कई और प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है, जैसे अमेजोन में होगा, फ्लिपकार्ट में होगा, बट उनकी आपने जैसे यहाँ पे स्मार्ट वॉच खरीदा, तो वो उनकी मेन वेबसाइट से क्यों खरीदा, राइट? ताकि एक एपीआई की डुप्लीकेट ना मिल जाए, रेप्लिका ना मिल जाए उसका, राइट? उसके बाद में प्राइस का भी हो सकता है, जैसे डिस्काउंट बता रहे थे, मतलब कम प्राइस में है, राइट? सो आप कितना कॉन्फिडेंट हो उस प्लेटफॉर्म को लेके, उस सर्विस प्रोवाइडर को लेके, उस पर भी मैटर करता है। फाइन। सो प्रोडक्ट कितना पैसे लगते हैं, अगर वो 1 लाख का होता है, नॉट गो एंड बाय ऑनलाइन। ओके, सो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन, एंड वी हैव सम टाइम, राइट? दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन, सो लेट्स सी। So you bought a new iPhone and after a week it started giving problem. Okay, so how would you feel, and what would you do next, or what would be your next steps? चलिए बताएं इसके बारे में, like what would be your process? सर पहले तो सर मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूंगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। अगर जैसे कि मेरा टच सेंसर काम नहीं कर रहा है, देन मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि हाँ टच सेंसर काम नहीं कर रहा है। तो सर मैं एप्पल के अपने एंड पे जितना मेरे से अगर हो पाता है उतना मैं देखूंगा कि जो भी ऐसा ना हो कि मैं कभी ऑफलाइन स्टोर पे जाके उस प्रोडक्ट को ठीक कराऊं। उससे पहले मैं ये देख लूंगा कि हाँ एप्पल के कस्टमर सर्विस पे वो सारी चीजें अवेलेबल है कि नहीं। तो वहां से सर मैं पहले कस्टमर सर्विस से पूछूंगा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्या किया जाए। अगर कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर अगर मुझे ऑनलाइन गाइड कर सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ करो, अगर वहां पे अगर वो हो जाता है ठीक, देन मैं वहीं पे प्रॉब्लम मेरा ठीक हो जाएगा। तो सर मैं कुछ करूंगा नहीं। उसके बाद अगर नहीं होता है, देन मैं उनके
स्टोर जाके पूछूंगा कि भाई हाँ यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ पे ऑफलाइन इंजीनियर्स होंगे तो वो मेरा देख लेंगे। अगर ऐसा भी ना हो तो मैं कस्टमर सर्विस पे कंप्लेंट करके अपने प्रोडक्ट को सर्विस सेंटर को डायरेक्ट पहुंचा दूंगा। इस तरह का कुछ प्रोसेस होना चाहिए। हम्म, Hello, sir. yes. If I buy the iPhone on online, तो सबसे पहले जब मुझे प्रॉब्लम आता है तो as they said कि we try to resolve it by ourselves. अगर वो नहीं हो पा रहा है, then जहाँ से हमने परचेस किया था फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे, एंड आफ्टर दैट एप्पल का जो स्टोर है, ऑनलाइन कस्टमर केयर है, उनको कॉल करके उनसे हम ये सारे डिटेल्स उनको देंगे कि हमने यहाँ से परचेस किया था, हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है अभी। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। आई थिंक काइंड ऑफ लाइक सेम प्रोसेस है। वंडरफुल। सो अब आप कब हैप्पी होगे और कब सैड होगे इन दिस प्रोसेस? सर हैप्पी जब होंगे जब हमारा प्रॉब्लम जो है वो फुल्ली सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्व। यस, यहाँ पे वो जादू कहाँ से निकलते हैं ये वाला? I don't use much of FigJam, but let's see. और सर सैड भी बताना है क्या, सैड कब होंगे? हाँ, सैड जरूरी है ना। तो सैड का सर ये है कि सर अगर हमारी एक्सपेक्टेशन मीट ना कर पाए, हमारे प्रोडक्ट में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक ना हो पाए और हमारे गोल हम अचीव नहीं कर पाएंगे, तो सर हम सैड हो जाएंगे वहाँ पे। Okay. So basically problem solve नहीं हुआ तो सैड हो गया, राइट? और इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी आपको। सर्विस, राइट? सो बेसिकली जो कस्टमर सर्विस है वो मैटर करेगी। आपने स्टोर पे विजिट किया, आपने बोला कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसने अगर छूटते ही बोल दिया कि नो दिस इज नॉट कवर्ड, मैंने वारंटी में कवर्ड नहीं है ये, और भी कुछ 3-4 चीज़ें, नहीं ये तो आपके एंड पे आपने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी है, आपने पक्का गिरा दिया होगा, और भी इश्यूज, ऐसे फालतू की चीज़ें बात करने अगर लग जाए वो कस्टमर सर्विस जो एजेंट है, सो आपका जो प्रॉब्लम है कोई, हाँ हाँ, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। आप ब्रांड का जो आपका जो क्या बोलेंगे, जो कॉन्फिडेंस है ब्रांड में, वो भी खत्म हो जाएगा, राइट? So that is the point. So what I'm trying to say is, it's not just about the product, it's also about the experience. Okay, the experience with what you get by not just using the product but other things like customer service. Okay, so ये process is simple है। Now I'll ask one more question. इसमें एक ये सवाल है, हम यहाँ बात कर रहे थे बिकॉज आप वहाँ पे यूजर बन के तो नहीं गए, आप वहाँ पे कस्टमर बन के गए, राइट? बिकॉज आपका प्रॉब्लम, यूजर तो जब यूज कर रहे हो तब ठीक है, यूजर हो आप। जो सर्विस सेंटर गए तो आप क्या बन गए? आप कस्टमर बन गए, राइट? और उसके बाद जो भी होता है, जो भी एक्सपीरियंस यू गेट बाय इंटरेक्टिंग विद द एजेंट, विद द सर्विस गाय एंड ऑल, ओके, सो दैट बिकम्स कस्टमर एक्सपीरियंस। अब हम जब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आपके हिसाब से व्हाट इज कस्टमर एक्सपीरियंस? यूजर एक्सपीरियंस समझ लिया हमने, राइट? कि एक्सपीरियंस दैट द यूजर गेट्स व्हेन यूजिंग द प्रोडक्ट, बट व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस? आपके हिसाब से क्या है ये? सर जैसे मेरा कोई प्रॉब्लम आया था, अगर मैं कस्टमर सर्विस सेंटर जाता हूँ तो सर मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग से वहाँ पे मीट होनी चाहिए चीज़ें। तो सर अगर मेरा कोई प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पे मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा कि हाँ मैं जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग से वो अगर मेरे को सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, देन वहाँ पे मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस थोड़ा खराब रहेगा। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर्स का ये रोल रहेगा कि हाँ मेरे को स्ट्रीमलाइन मेरा पूरा जर्नी रहना चाहिए, जो भी मेरी प्रॉब्लम आई है उसको अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चरली थ्रू आउट द जर्नी मेरे को सॉल्व करके वो दे, और इससे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा एज ए कस्टमर। ठीक है, परफेक्ट है। सो दो जो ये जो टर्म्स हैं, राइट, आई मीन द यूजर एक्सपीरियंस एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, ये आपको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, सो यूजर एक्सपीरियंस क्या है? कोई प्रोडक्ट है, जब मैं इसको यूज करता हूँ
ठीक है, तो मुझे जो एक्सपीरियंस उससे मिलता है, ओके, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज यूजर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है? कस्टमर एक्सपीरियंस होता है यूजर एक्सपीरियंस प्लस अदर एक्सपीरियंसेस। जैसे अभिषेक ने बताया ना कि सर्विस सेंटर में जाता हूँ, तो जो वहाँ पे एजेंट है या रिसेप्शन में जो भी है, राइट, वो मुझे कैसे ग्रीट करता है, क्योंकि मैं मेरे पास पहले ही इश्यू है, मैं इश्यू लेके जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ। उसके बाद में अगर रिसेप्शनिस्ट मुझे सही से बात नहीं करती है, तो मैं और फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, राइट। उसके बाद में मेरा जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाएगा उस प्रोडक्ट से और उस ब्रांड से। सो इट डज मैटर इट कि जो रिसेप्शनिस्ट है या फिर जो सर्विस सेंटर का जो भी एजेंट है, वो हम में से कैसे बात करता है, मेरे को क्या प्रोवाइड करता है, किस तरह का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अगर मैं जाते ही मुझे वो बोले कि लाइक वेलकम सर, लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प यू, प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से बात करेगा और मेरे को प्रोडक्ट को वो जो इश्यू है उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो मेरा जो एक्सपीरियंस है एज अ कस्टमर, ओके, कस्टमर कौन होता है? जो सामान खरीदता है। तो मैंने से सामान खरीदा, मुझे उसने बोला कि लाइक ओके वी अंडरस्टैंड, वी आर सॉरी फॉर दिस द एक्सपीरियंस दैट यू आर गेटिंग, आई मीन आपको प्रोडक्ट खराब हो गया, तो विल ट्राई टू सॉल्व इट, कैन यू प्लीज सेट, लेट मी सी व्हाट इज द इशू एंड ऑल। सो अगर आपको प्रॉपर्ली सुनता है और सुन के आपके जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो उससे आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है दैट इज बेसिकली द कस्टमर एक्सपीरियंस। इट डस नॉट जस्ट इंक्लूड द फिजिकल विजिट टू अ स्टोर, बट ऑल्सो जब कॉल सेंटर कॉल करते हो और इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू वेट फॉर लाइक 5 मिनट्स, आपको इमीडिएटली वो किसी either through like bot आपको क्वेरी सॉल्व करते हैं और by making you talk to a real person, अगर वो क्वेरी सॉल्व करते हैं and that too like in less time, so आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। Okay, so that's why it's very important to understand the difference between the customer experience and the user experience। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना चाहिए कि यूजर कौन होता है और कस्टमर कौन होता है। कस्टमर वो होता है जो सामान खरीदता है, राइट, और यूजर वो होता है जो कि सामान यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चों की बाइक है या ले लो एक साइकिल है, तो साइकिल जब है जो खरीदने जाते हैं, तो कौन खरीदने जाते हैं? पेरेंट्स। सो पेरेंट्स आर द कस्टमर्स, क्योंकि दे आर द वन हु आर पेइंग और हु इज पेइंग फॉर द प्रोडक्ट। ओके, एंड यूजर कौन है? यूजर जो है वो बच्चा है, छोटा सा बच्चा जो कि उस साइकिल को यूज करता है। सो इस तरीके से चीजों को समझो, the difference between customer and the user. Perfect. So I think we are good, right? I mean, like already taken like 10 minutes more. So there are many more things, many other questions that I have, but I think like what I'll do now is like we'll talk more about these things next week, and next week me what I'll do is I'll have like similar kind of questions, and these questions will set the foundation for you। और इसको मैं वो theoretical तरीके से नहीं समझाना चाह रहा था मैं user experience, so I've just created this, I've come up with these questions, and I think like through this I'll try to explain more about design, how to create products, and also I'll try to like complete the workshop in 10-12 classes में, sessions में, और 8-10 sessions में जल्दी जल्दी करूंगा, but I'll try to keep it very simple, and I hope this format is working and आप लोगों को समझ में आ रहा है।